Hello, everyone. A very logical day to all of you. And this is the explanation of the editorial, the first editorial of the Indian Express, September 26th. So let's see what we have here is healing Manipur. Healing means it is hurt. Manipur is hurt. So you need to now uh, apply some or the other ointment, some or the other thing so that it soothes now. वो heal हो जाएगी, सही हो जाएगी. ठीक है देखें क्या जरूरत है मणिपुर को so the violence that is raged in Manipur since May, and we have been reading many articles related to this topic since May. Okay, seems to have abated. Abated is reduced somewhat, thoda bahut, ऐसा लग रहा है. However, the state remains on edge. The Biden government found wanting on several fronts. Wanting means it is lacking. राइट वांट तभी होती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है तभी वो वांट होता है on several fronts must now work towards building bridges between ethnic groups so building bridges मतलब आप उन्हें पैच अप कर लेना चाहिए and being seen to be above the bitter identity politics that has pushed the state to the brink एकदम पीछे टू द ब्रिंक का मतलब एज तक उसने कहा ना यहाँ पर भी एज यूज किया था उसने रिमेन्स ऑन एज एंड ब्रिंग द स्टेट टू द ब्रिंक पर किनारे पे एकदम लेके आना ये हो गया है it did the right thing last week by lifting the ban on mobile internet. This was one thing that it did good. Lifting the ban. Singh had justified मतलब उन्होंने बैन लगाया क्यों था लगाया इसलिए था क्योंकि as a policing tool to counter the spread of fake news ताकि fake news spread ना हो लेकिन हुआ क्या इससे जो actual news थी वो भी रुक गई it checked the flow of the accurate information right and sharpened polarization amongst the Manipur's warring communities cookies and metis now as the state takes steps towards restoring normalcy अब धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं so the state government must heed क्या करना चाहिए must heed the advice of a Supreme Court appointed panel. Panel appoint किया गया है Supreme Court ने से तो state has to listen to that. Last week, the committee of 3 retired High Court judges suggested that the government publish a list of the dead so that their next of kin can be identified. अगर नाम होगा लिस्ट में कि ये कोई नहीं है अभी so and if no one comes forward dispose of the bodies in a respectable manner this could help bring a modicum of closure to many grieving families धीरे धीरे उनका जो ग्रीव है वो कम हो जाए कम इन द सेंस नहीं तो जो प्रॉब्लम है they don't know where their kin is where their relatives are that is the thing so this is at least one step that they should take. According to the Manipur police, the last rites of at least 96 of the deceased, more than half of the official death count, have not taken place. Abhi tak nahi hai. This is largely because families of one community have not been able to go to visit the mortuaries in areas dominated by the other. So the issue became a flashpoint last month when the Indigenous Tribal Leaders Forum, a largely Kuki group, announced that it would conduct a mass burial at Turbung village along the border of the Kuki-dominated Churachandpur and Meeti majority Bishnupur district. उनके border पे आ जाएंगे. It required an appeal by the Union Home Ministry for the group to call off. They wanted to call off this, but tensions had escalated by then. हम escalated word बहुत बार पढ़ लेते हैं ना escalation है de-escalation है leading to another round of violence between the two districts. Solution proposed by the SC panel could help soothe frayed nerves. It is disturbing that lessons from the nearly 6 month long conflict continue. ये प्रॉब्लम है ऑथर की तरफ से ये सेंटेंस है कि अभी तक इन लोगों ने लेसन्स नहीं सीखे हैं इस गवर्नमेंट ने दे कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टू इल्यूड द लेसन्स इतने सारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है लेकिन जो ये गवर्नमेंट है उसने अभी तक कुछ सीखा नहीं है At a SC hearing last month, Solicitor General Tushar Mehta, appearing for Manipur, said that most bodies lying unclaimed in the morgues are of infiltrators. इनके है This is a piece with Singh's persistent blaming. उन्होंने भी blame किया है किसको
outsiders को for the violence, a position that has invited accusations of partisanship. That partisanship मतलब किसी का favor करना, ये word again we have done this many times. So that the Manipur CM still doesn't recognize the need for an honest discussion on his governance and political failures is evident from his request last week to the center to wind up the free movement regime along the Indo-Myanmar border. ये कहा है गवर्नमेंट ने, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर को. What did he cite? He mentioned, cited is mentioned, porous borders as one of the reasons for illegal migration. माइग्रेशन हो रही है, आउटसाइडर्स आ रहे हैं, आउटसाइडर्स की वजह से वहां पे वायलेंस हो रहा है. तो ये गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है अभी तक समझ नहीं पाई है कि प्रॉब्लम कहाँ है. Two things he has repeatedly blamed for the conflict. So this is what he is blaming. मणिपुर डेस्परेटली नीड्स अ हीलिंग टच. उसे समझ में आ जाना चाहिए कि अभी ये इतना अगर वायलेंस है, फायर है वहां पे, राइट, ऑफ दिस violence, this has to come to an end somehow. So it needs a healing touch. The people are hurt now. So government sensitive to reconciling differences. Singh's hardline on the insider-outside divide is inimical to rebuilding trust in the border state, right? वो डिवाइडर इंसाइडर आउटसाइडर वाली बात करेंगे तो इससे वो और हार्म क्रिएट करेंगे. It's going to hurt the state. The center, which has been seen as it has been seen as soft on the Manipur CM serial abdications, must push him to accept. मतलब वो बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, abandon कर लेते हैं, ठीक है. But now he needs to be pushed to accept the SC panel's advice. It must not exceed. मतलब वापस से सेंटर जो है गवर्नमेंट है उसे इस चीफ मिनिस्टर की बातों पर मान लेना, आराम से इनकी बात मान लेना, वो नहीं करना चाहिए. इट मस्ट नॉट एक्सीड टू सिंग्स प्रपोजल टू क्लोज द बॉर्डर्स, राइट. कि इनसाइड आउटसाइड वाले हैं, मतलब बाहर से जो लोग आ रहे हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं. ये नहीं मानना चाहिए सेंटर को. एंड दे शुड नॉट क्लोज द बॉर्डर्स देयर. And whatever the panel appointed by the SC is saying or suggesting should be followed by the chief minister. So the main idea is the same thing. It must accept the SC panel's advice on unclaimed bodies. Center must not accede to proposal to close the borders. Questions? Yes. First slide में assumption बन जाएगा, मैंने discuss किया है. Conclusion you can easily make from the second part and main argument में पूरा passage का simple से questions है बस. And yes, of course, if you when you write the main argument, it will be similar to the central idea. So no problem about that, right? Tone and style में आज की style हम देखते हैं vindictive. Vindictive is expresses anger. ठीक है. सोचो इस पैसेज का विंडिक्टिव एग्जैक्टली नहीं था, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत गुस्सा उसमें दिख रहा था कि देखो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है. उसमें थोड़ा सा ना ऐसा था जैसे ना डेस्परेट वाला था, द पीपल आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या प्रॉब्लम है, वो होता है, वो इस स्टाइल का था. विंडिक्टिव में यू आर लाइक ब्लेमिंग अदर्स, यू वांट रिवेंज. हियर इट इज हेट्रेड, रिसेंटमेंट, एंगर, रिवेंज. ये विंडिक्टिव होता है. एक और वर्ड होता है विंडिकेटिव, वो अलग होता है, यू कैन सर्च फॉर इट. So these are the two confusing words, vindictive and vindicative, right? So this is where you express your anger, you blame somebody you hate, there is resentment seen, or you have to, or you are bound on taking revenge. Oh, you cannot do this. तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? Angry at your brother, at your sibling, whoever it is, pushing him. How could you do this? A friend maybe, और सो कॉल्ड फ्रेंड जैसे कुछ गड़बड़ कर ली, जिसने बता दिया तुम्हें पेरेंट्स को कि तुम हो कहाँ, अगले दिन तुम गुस्से में आते हो. हाउ कुड यू डू दिस? दैट वे. दैट्स इट, इट्स इनफ नाउ. तो दैट्स इट, इट्स इनफ नाउ मतलब हद हो गई बस से, अब मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकता. बस गुस्सा on the action that was done. Now I'm not going to tolerate. Now I'm not going to do anything. Now I'll show you
क्या कर सकता हूं मैं, ऐसा। ठीक है, ये जब एकदम वो फीलिंग आ जाएगी ना, दैट विल बी विंडिक्टिव। राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज, ओ आई एम नाउ गोइंग टू रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज। अब मैं बताऊंगा अथॉरिटीज को कि तुमने पिछले हफ्ते क्या किया था, क्योंकि तुमने मेरे पेरेंट्स को बता दिया कि मैं आज कहाँ हूँ। सो आई टेल द अथॉरिटीज, टू द कॉलेज अथॉरिटीज, दैट वेयर यू वर। ये जो बदले की भावना होती है, दैट इज विंडिक्टिव। So I hope you have understood this, and that's all for today. So thank you. Stay logical and have a very logical weekend ahead.